Now people are talking about manifestation everywhere. What is it? What is it that people were doing in the past? People were praying and क्या बोलते थे? मेरी मम्मी मुझे याद है बचपन से बोलती थी that if you don't have anything, you know, be thankful for what you have. You know, just say thank you to every night for I'm thankful for the food on my plate. I'm thankful for this. I'm thankful for my homework that got completed on time. What was that? Isn't that what we are doing in our logics of manifestation today? I remember every night, whenever my mom would come to switch off light or wish me and my brother good night, she would say, "Thank you, Jai Mata Di," and she would say those things because that kept her to the center of universe and her, and she would tell us कि कभी भी कुछ मांगना नहीं चाहिए, thank you करना चाहिए, जो चीज़ चाहिए उसके लिए भी thank you करना चाहिए. I think that was manifestation, and she had learned it from her own upbringing, which was very religious. You know, so it's. I think that is why we are too harsh on ourselves. That is why we are in the places of life where happiness we have to find outside the world and not inside, because those centers are not aligned. They're not. That's why there is a brain that is a mess. That we might sort, we might get to a place. But I think the first step that I am trying to do now is to connect those points on the universe which I can rely on, that wherever I'm standing, I could connect to that, breathe in, breathe out, and have faith in it. That, you know, you have a better plan for me and I shouldn't cry tonight. Or even if I'm crying, I'm still thankful. So I think when you're coming from this searching mindset, looking and searching for happiness, then in that whole process and mindset, you forget that you could also be a creator of that. And you could create it yourself, for others around you. वो भूल जाते हैं, और जब सभी उसी quest में होंगे that we have to find it, और सभी ढूंढ रहे हैं, तो फिर create किसी को तो करना पड़ेगा ना. And that power, our power that we have, like the true power of creating it, we just let go of it, और हम उसको इतना हल्के में लेते हैं कि भूल ही जाते हैं कि वो एक इतनी बड़ी super power है that you can come out of any thing, you know. The universe is inside you. I believe that, like, मैं सच बोल रही ना ये this was not even a dream that I ever thought. मतलब अगर ये dream होता ना, मैं बहुत पहले शुरू करती. Like I would have started blogging in college. It's not like I did not know. It's not like I did not have the resources. I had the brains for it, but I did not even start. You know, I realized कि अच्छा ऐसा होता है. अच्छा DU के अंदर ना पोइट्री कॉम्पिटिशन्स होते थे, और सच बात बताऊँ उसके विनिंग में पैसा मिलता था. एंड आई थॉट बढ़िया यार, पॉकेट मनी लेनी पड़ेगी, शॉपिंग करेंगे. मतलब द होल आइडिया वाज टू परफॉर्म. उतना ही होता आई बीन अ स्टेज पर्सन ऑलवेज. पर जितनी अपॉर्चुनिटीज छोटे होते स्कूल में मिलती थी, लाइक मेरी मॉम प्रिंसिपल थी, तो एक ही एनुअल फंक्शन में 5-6 बार नाच रही हूँ. देन आई वेंट टू कॉन्वेंट जहाँ एक बार भी परफॉर्म करने को नहीं मिल रहा है. सो आई ऑलवेज लव टू गो इन फ्रंट ऑफ एन ऑडियंस एंड डांस और से थिंग्स आउट. मैं वो बंदी हूँ जो किसी भी पार्टी में सुबह 3 बजे तक नाचती है, चाहे मेरे घर की हो चाहे तुम्हारे घर की हो. आई एम दैट पर्सन. तो इट्स ऑलवेज ग्रेट टू, बट आई वाज डूइंग इट फॉर, मुझे पता ही नहीं था कि ये सब होता है. यू नो, आई नेवर ड्रीम्ड ऑफ दिस thing that I would be ever sitting here. So that plan, the miracles that they're planned for you are way bigger. I always wanted to do big things. Always. It was always there that, you know, I want to, like, मैं छोटी थी तो मैं प्लान बनाती थी कि मैं गुंडे हायर करूंगी बहुत सारे. और बिकॉज मेरे घर पे ऐसे बात बोलती थी कि बहुत सारे जो देयर पीपल हु आर, जो मजबूर हैं, या देयर आर सो मेनी पीपल हु आर डूइंग इट. लाइक माय मौसी यूज्ड टू लिव इन मुंबई एंड शी यूज्ड टू टेल देयर इज अ होल माफिया हु बेग्स. There's a mafia gang जो beg कराते हैं, and then there are very rich people also, the beggars on the road. She would tell me things like that, वो news में आती थी. So I used to think that I will hire a mafia and pick up as many as children I could pick up from road and make them work for you and learn that, you know, you not for me. For themselves, like study, work, get jobs, and you know, this is what you're earning, this is your earning, now pay your rent. Like the lifestyle, we are also taught a life. What is urbanization? That we are told ki flat le lo, EMI le lo, ye salary se bhar lo, you know, you live a nice life, you know. So I thought maybe I'll do this. So the plan was always to do things which are you know, good for, like, I'm glad that I'm performing, because there are, on good days, on very beautiful days, on very grateful days, there are messages that किसी के घर पे ना कोई चीज़ बदल गई because of a poetry. किसी के अंदर कोई चीज़ बदल गई, और मैं वही तो चाहती थी. So that was of course a very illegal way to do it. I'm glad that you didn't take up that path. Honestly, I'm still in for the plan because I feel that it is going to work. Yeah. Like anything, because anyone. Bro, that's underworld, hello. Please sing my call. No, I was getting all calls from, I don't know, Dubai of the world. It was such a filmy story, because जो गुंडा होगा उसका दिल बदल जाएगा and he'll start doing good things. But do you really feel that? क्योंकि मुझे तो बहुत large part of my life तक लगता था, अभी भी लगता है. I think बहुत लड़कियों को ये लगता है
लगता है, you know, that falling for the bad guy kind of a thing कि ये मेरे लिए बदल जाएगा and all of that. मैं What do you I think? am so happy. मुझे कभी भी ये नहीं लगता था, कभी भी. And I would tell my girlfriends, oh my god, this is the best part of my life. All my friends were committed, you know, while we were in 9, 10th, 11th, 12th, and I was single always. And that's why I was tomboyish. मैं डस्टर फेंक के मार रही हूँ, किसी को जूता फेंक के मार रही हूँ कि तूने ऐसे कैसे बोला, ये कमेंट सेक्सिस्ट है. And I was always, you know, मैं वो feminist थी जो जिसको गाली देते हैं लोग. But because I never realized that feminism meant equality until I reached a certain point of time. I was all for women, and also I think somewhere I was right because I was teaching. There were men who were telling my girlfriends ki chunni thik kar and all of those things, you know, and there were men who were extremely possessive. And I'm telling you, I'm coming from a very, you know, I don't know how, but I had that kind of maturity that for love you don't have to do this. तो भाई साहब मैं तो वो बंदी थी जो सबके ब्रेकअप कराती थी. एंड अगर किसी के बॉयफ्रेंड को पता लगता था कि मैं उसकी दोस्त हूँ तो पहली चीज वो आई लव यू बोलने से पहले हमारी लड़ाई कर इसको छोड़ो पहले. मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे एंड ऑब्वियसली But you have played Love Guru in your life. I think जब आप सिंगल होते हो तो आप Love Guru. ऑफ कोर्स बट द राइट काइंड. I've also played, and I've never been in a relationship all my right life. kind. Okay, my graduation, my masters was almost ending, and that's when I got into my first ever relationship. And Yeah? yeah, I married the same man, and then that didn't work out. Wow. Whatever, but yeah, that was my first relationship, and all this while I'm giving love advices like selling them like hotcakes. But I am For no I am reason. glad I'm still stuck to my advices. Like I would tell my friends, you know, and I would give the worst. I tell him you're in 10th class. You have to study, like somebody wanted to be a doctor and then कि यार मेरा ना मैं सोच रही हूँ कैसे बोलते हैं ना बंदा पटाना और सेटिंग करवा दे ऐसे टर्म्स होते थे. एंड ऑब्वियसली दे वर नॉट नाइस टर्म्स. बट तो मैं तो सबको बोलती थी कि उसको बोल 2 साल तेरे लिए वेट करे. अगर वो तेरे लिए 2 साल वेट कर सकता है जब तक जान philosophy to personal life. And I would tell that if any guy comes to my life, I'm going to ask him to wait for 10 years, and if he waits, then I'm his. It was such a horrible. But I was giving them weirdest advices कि बेटा पढ़ And they लो. were taking it. No, I'm glad. Do you think so? Do you That's think what. so that when your hormones, my hormones were suppressed because I was scared of my dad. क्योंकि मैं पूरा गेम खेल रही हूँ rebellion का, and if I do anything like this, मेरा तो पूरा गेम उल्टा पड़ जाएगा. So I thought that first I have to get out of here. I have to score well. I have to get into a nice college, score well in a test, like you know whatever it is. I have to get out of here. Then I'll see what are my कि क्या इमोशन है, क्या क्वांटिटी में है एस्ट्रोजन है, क्या क्वांटिटी में क्या अवेलेबल है. आई चेक. मैंने तो बहुत सप्रेस किया है. सो आई वाज कॉल्ड लाइक ये तो बंदा है, ये तो भाई है हमारा. एंड आई हैड सो मेनी लाइक आई हैड फेशियल हेयर. तो मेरी मूछे भी आते कि कुंडी मूछे रख ले तो हमारे साथ. एंड आई वुड टेक दोस जोक्स आल्सो. दे वुड हर्ट अ लिटिल, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई थिंक इट्स बेटर देन. I had been in the same place. People would treat me like a bro. Yeah. I was everybody's bro. Yeah. And then eventually I realized I had no friends because I was such a bro to everyone. At the end, everyone would abandon me, you know. I had shorter hair. I was very thin and, you know, always... Tomboys are easy to abandon also. Yeah, they're very because easy to abandon. You are not close to them in the right way. No, in my heart, I was very close, you know, to because I would genuinely love and care for people. Yeah. Because, see, I'm coming from a very empty place in my Yeah. life. My home is not I that can home where I have love. I have no You love. find that in your friends then. And then you find that in people, and then Yeah. they also abandon you because they feel that you don't relate to them. Because girls won't relate to me because they say, "Isko kya samajh mein aayega? She has not been in love. She doesn't want to be in love." And the guys would. I was a bro to them. So for them, when the girl would come in, so girl would be the center of their world. You know how it is. So everybody finds I think that I've been used center. because of that also. Not that people would love me less, and then they would show complete affection, not denying that. But I was also the person ki yaar please मेरी girlfriend के मतलब because my parents were not strict. They were disciplined. They were not strict. It's not like I was not allowed to go out of the home, but I was supposed to be disciplined. That कि मोहल्ले में से कोई ऐसा उल्टी बात नहीं आनी चाहिए. That even if you're driving a scooty, you're going. And नहीं भी आई है. Touch wood, I've been very careful. But I was that person that a classmate would call that, you know, my girlfriend is stuck at home. Could you pick her up and drop her here? I was that pick and drop person only to gain small part of their attention. I can't remember how many cards I have passed on, flowers I've taken to my own home. It's surprisingly you know, weird because at my home there were no restrictions of time. Yeah. I've spoken to girls, guys at 4 in the morning, and my father has picked up the call. Like you know, 2 landline होते थे, 2 अलग कमरों में. कभी पापा ने उठा लिया, फोन आया तो all of that has happened, and they never said a word to me. Like I have grown in the most liberal, and a part of it comes from the ignorance because they didn't know there's another world that does thing in this way. True that. They could never सीधे think लोग of थे, me like that also. बड़े सीधे लोग थे. एक तो उससे आता था और दूसरा इससे आता था कि we trust our daughter enough or something. तो एक mixture of ignorance and trusting whatever जो था, but that was a very viable situation for me to. So I became that person who was very
ट्रस्टिंग फॉर अदर फ्रेंड्स, उनके पेरेंट्स के लिए भी, हाँ इसके साथ है तो ठीक ही है, हाँ। इसके साथ है तो दे हाँ, हैव द मतलब ट्रस्ट ये फैक्टर। लेकर- मेरा नाम बोल के कुछ कहीं भी चल रहा है लाइफ में, मैं किसी के फ्लावर्स लेके आ रही हूँ, किसी के कार्ड्स छुपा रही हूँ, किसी को ट्रांसफर कर रही हूँ, सो ऑल ऑफ दैट इज हैपनिंग। One time there was a friend of mine. So she thought that now she needs to study and all this is, you know, getting to her, all this drama. तो और 12th में हो गए हैं हम लोग अब. तो close friend of mine now, so she's married and everything. So she writes a letter. Okay, does not come to tuition. Writes a letter कि अब कि नायाब आई एम गोइंग टू मिस यू बट मैं अब शायद मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रही हूँ. फुल लव लेटर एंड आई हैव टू गेट बैक नाउ. अब तुझे सबका ध्यान रखना है एंड नेम्स एवरी पर्सन हुज इन अ रिलेशनशिप. Oh, wow. इसका ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना है. यू हैव टू मेक श्योर दैट हमारी जो ये दोस्त है ये इमोशनली कभी ये ना पड़े. एंड पुट्स दैट लेटर. Gives, I haven't even read that. Okay, now every of my friend who comes to my home as a partner or as a boyfriend, है ना, और उसमें उसने तो सब कुछ लिख दिया और मैं थैंकफुली मेरा कुछ था भी नहीं तो उसमें कुछ लिखा भी नहीं गया. और ना मैं ट्यूशन से फटाफट आई, वो वाली बुक्स रखी और मैं दूसरी ट्यूशन के लिए निकल गई. वो चिट्ठी कहीं गिर गई. आई कम बैक होम एट 9 फ्रॉम माई लास्ट ट्यूशन एंड मेरे मम्मी पापा उसको खोल के बैठे हैं एंड सेइंग कि क्या है ये, किसका ध्यान रखना है तुझे, दाई मम्मी है तू, क्या है तू. And I'm like, किसकी चिट्ठी है ये, मैंने खोल के भी नहीं देखी. और ना पता है इन 2011 चिट्ठीज वर वेरी बिग, क्योंकि big. टेक्स्ट मैसेजेस 100 आपको सस्ते, मतलब जितना अफोर्ड कर पाते थे उतना ही खरीदते थे. उसकी भी एक वर्ड लिमिट होती है 30 वर्ड्स है वो, तो चिट्ठियों की कोई लिमिट नहीं नो, होती. आई कम फ्रॉम अ टाइम जहाँ पे और ज्यादा ही और थी, ज्यादा था. क्योंकि नहीं मोबाइल फोन भी बिकॉज नहीं मेरे को होते लगता है थे। हम स्मॉल टाउनर्स थे ना, तो वहाँ पे वो चीजें लेट भी आती Late भी आई हैं, कि correct. जो चीज दिल्ली में 2010 में आ गई वो वहाँ पे अब भी 15 में आएगी, तो काफी गैप होता था. तो हम लोग इतनी चिट्ठियां पड़ी है ना मेरे पास, तो वो वाली चिट्ठी पकड़ गई. दैट स्टिल वो आज तक मेरे पापा के ड्रॉर में है. कह रहे अच्छा ये रोज आती है तो तुम पढ़ाई करते हो या उसके बॉय क्या तू ध्यान रखती है, क्यों ये क्या चल रहा है. एंड आई एम लाइक देखो मेरा नाम नहीं है ना इसमें, लेट इट गो, वो पागल है, वो ज्यादा सेंटी है, प्लीज उसको जाने दो. ये चिट्ठी आप रख लो, मेरे को पढ़ने दो कि कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं है इसमें. आप रखो. क्या यार, फनी लाइफ इज ना. बहुत. ये तो इतने इनसे मैंने इतनी चिट्ठियां पास की हैं, मेरे घर में इतनी चिट्ठियां पड़ी हैं. ओ माय गुडनेस. एंड ओ गॉड, आई नेवर लाइक यू नो आई हैड टू क्रश माय क्रशेस आल्सो कि भाई साहब मैं What is that piece of poetry that you've written that is closest to your heart, जो आपने कोई इमोशन बहुत जबरदस्त तरीके से फील किया और अभी ताजा ताजा फील ही कर रहे हो and you've put it down in words? there's only one poetry that has come out Yeah. like this. It's called Justuju. So I was fighting. Say a few lines also. Yeah, Justuju is basically longing for someone, है ना. और I was fighting with somebody very close to me. And it was COVID and it was a horrible, horrible time. And we used to be together. We work in the same office. We're together now. And the fact that I was feeling was this कि तू एक दिन जब लौट कर मुझे ढूंढता आएगा, मैं तुझको अगर ना मिली तो फिर किधर जाएगा. सबसे पहला दरवाजा किसका खटखटाएगा. क्या तू मुझे तलाशने उसी घर आएगा जहां तूने और मैंने मिलकर हमको खो दिया था. जब मैं से तंग आकर, जो आपकी ऑल्टर ईगो होती है, जो आपकी सो कॉल्ड मैं होती है, जब मैं से तंग आकर गंभीर रो दिया था. घर आएगा तो कदम जरा संभल कर रखना. इस घर में मेरे हिस्से जगह जगह पर रहते हैं. जब से तू गया है मेरे पांव दरवाजे पर ही बैठे हैं. दिल बिस्तर पर करवटें बदलता रहता है. बंद ना हो आंखों से दफा दफा कहता है कि वो आएगा लौटकर एक दिन जरूर. कानों में हल्के से फुसफुसा देता है. मासूम हाथ बातों में आ जाया करते हैं, फिर हर रात खुद ही को बाहों में भरते हैं. तो एक दिन जब लौटकर मुझे ढूंढता आएगा, मुझे यूं बिखरा देख, क्या खुद बिखर जाएगा या उठा लेगा मुझको और जर्रा जर्रा जोड़ देगा. संभाल लेगा मुझको, मेरी चुप्पी तोड़ देगा. वक्त भर से जो मेरे साथ रहा है, क्या तेरा ये इंतजार मुझे छोड़ पाएगा. तो एक दिन जब लौटकर मुझे ढूंढता आएगा, मैं तुझको अगर ना मिली तो फिर किधर जाएगा.